Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start the previous year question series of the geography. Now in this we are going to cover all of the concepts of the physical geography as well as the Indian geography. Now the questions that we are going to solve are taken from the civil services examination from the year 1993. It includes all the questions that have been asked in the state PSC examination, and then it also includes the questions which are taken from the CDES and CAPF respectively. Now all of the questions, and if you do this series, all of the concepts regarding geography, physical geography as well as Indian geography and world geography will be absolutely clear. So let us start with our first chapter, that is the solar system, universe, latitude and longitudes. So let's move to the question straight away. Now the first question is, in the northern hemisphere the longest day of the year normally occurs in the, now this all concept is related to the period of solstice. Now solstice are of two type. One is the summer solstice and the other one is winter solstice. Now what happens in the summer solstice is that the sun rays directly fall on the Tropic of Cancer. It means that there is day in the northern hemisphere and warmer condition in the northern hemisphere, whereas there are colder conditions as pertaining in the southern hemisphere. Now this summer solstice happens around 21 June. Okay. Now on the other hand, what happens in the winter solstice is that the sun rays falls on the Tropic of Capricorn. Okay. So there is colder condition in the northern hemisphere and there is warmer condition in the southern hemisphere. Now this winter solstice happens on 21 December. Okay. Other than this solstice, there are two other equinoxes. Now one equinox is known as the vernal equinox, in which there is equal amount of rays falling directly on the center, and this is around March 20. And there is autumn equinox which happens on September 22. Okay, now this question is asking about in the northern hemisphere the longest day of the year normally occurs. Now, when will the longest day occur? When the sun rays are directly falling on the Tropic of Cancer. And it is related, this statement is asking about what? It is asking about the summer solstice. So when does the summer solstice occur? It occurs on 21st of June. So the options are first half of the month of June, second half of the month of June. तो obviously ना 21 जून is second half, 15th जून के बाद तो second half start हो जाएगा. That is why second half of the month of June is appropriate and absolutely the correct answer to this question. I hope you have understand all the concepts. So 1 का B is absolutely correct. Now this question was asked in the UPSC CSC prelims examination of 2022. Let's now move to the next question. Now, this question is based on the deflection, the reflective laws. Now, the high clouds primarily deflect solar radiation and cool the surface of the earth. Okay, now, if we talk about the clouds, so these clouds are related to the heating and cooling. Other than heating and cooling, which depends on the clouds, other things also matter, such as clouds altitude, the size of the cloud, then the particles of which the clouds are made. Now, the clouds are made up of dust particles, a hygroscopic nuclei that is formed around the dust particles, and then the droplets are formed through the process of condensation. This is the way in which the clouds are formed. Now, the first statement is high clouds reflect the solar radiation. No, the high clouds do not reflect the solar radiation, but the solar radiation affected by the low thick clouds. And these low thick clouds deflect the solar radiation and it helps in the cooling the surface of the earth. So the first statement is incorrect. Next statement is low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the Earth's surface and thus causing the warming effect. Now, we know that this infrared emissions, these are there in the ionosphere of the
layers of the atmosphere. Now ionosphere is considerably very high. ओके सबसे ग्राउंड पे तो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, देन थर्मोस्फेयर है, सॉरी मेसोस्फेयर है, एंड देन देयर इज थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर. नाउ इतनी हाइट पे क्या लो क्लाउड्स हो सकते हैं? क्या नहीं होंगे ना, हाई क्लाउड्स होंगे. सो दिस इज द हाई क्लाउड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड radiations. Okay, so if the question is asking about the correct statement here, none of the given here is correct. Okay, neither one is correct nor two is correct. Reverse statement दिए हैं. Low clouds is related to the surface cooling of the surface, whereas high clouds is related to the infrared radiation. So neither one nor two is the correct answer to this question. Let's now move to the next question. Now what is the difference between the asteroid and the comet? Now if I tell you before solving this question about asteroid and comets, so these asteroids are also known as the minor planets. Why minor planets? Because these are made up of rocks. Okay, and these were formed with the formation of solar system around 4.5 billion years ago. Okay, now these comets are snowballs, cosmic snowballs. These are made up of gas, these are made up of rock, this is made up of sun, and these comet have a tail on its end. Now these comets are also found all around the universe, but if I talk about the asteroids, these are found between two planets, that is between Mars and Jupiter. So between Mars and Jupiter these asteroids are formed. So this is the basic information. Let us see इस basic information से ये question हमारा solve हो पाता है या नहीं. Now asteroids are small rocky planetoids, while comets are formed of the frozen gases held together by rocky and metallic minerals. Absolutely correct. अभी देखा हमने ये. Asteroids are found mostly between the orbit of Jupiter and Mars. Absolutely correct. While comets are found mostly between Venus and Mercury. Now second statement हमारा false हो गया यहाँ पे. क्यों false हो गया? Because comets are found all around the universe. ठीक है, so the second statement is incorrect यहाँ पे. ठीक है, first statement we know is correct, तो obviously answer इसका 1 and 3 ही होगा. But let us see the explanation of the third one as well. Comets show a perceptible glowing tail while asteroid do not. अभी मैंने बताया comets have a tail, they have a long tail at their last. So third statement हमारा सही है. Correct answer हमारा 1 and 3 होगा इसका. So I hope you have understood this. ठीक है, let's now move to the next question. Now in order of their distance from the sun, which of the following planet lie between Mars and Uranus? Now we know that we have 8 planets starting Mercury, Venus, Earth, Mars. Mars के बाद कौन सा planet आता है? Jupiter आता है, then is Saturn, then is Uranus and then is Neptune. Now Mars and Uranus के बीच में कौन से दो planets हैं? This is Jupiter and Saturn. Jupiter and Saturn. B is the absolutely correct answer to this question. Let's now move to the next question. Now who of the following scientists proved that the star with the mass less than 1.44 times the mass of the sun end up as white dwarfs when they die? Now if I talk about the name of the scientist, so the correct answer to this question is S. Chandrasekhar. Now S. Chandrasekhar was an Indian born scientist and he was famous for coming up with the theory that explains the death of universe stars. जो भी stars होते हैं ना यूनिवर्स में, उसके डेथ के रिगार्डिंग द थ्योरी वाज गिवन बाय एस चंद्रशेखर. नाउ दिस वाज, he also gave a theory of the Chandrasekhar limit that you will know, I know. Now Chandrasekhar showed that it is impossible for a white dwarf star which is supported solely by the gas of electrons to be stable at a mass if it is greater than 1.44 times the mass of the sun. Okay, so this theory was given by S. Chandrasekhar. So B is the correct answer to this question. Let's now move to the next question. Now the albedo of an object. Now albedo का मैं मतलब बता देता हूँ, the power to reflect something. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्लैक पहना है तो वो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि द ब्लैक कलर इज़ नोन टू एब्जॉर्ब. ठीक है,
just like a black hole. Whether as if I tell about white, so white के आपको पता है white में बहुत ज़्यादा reflection होता है. तो what does it means regarding white and black with respect to the albedo? इसका मतलब ये the white light has the highest albedo, मतलब कि highest reflecting power. So this is the concept that is related to albedo. Now the albedo of an object determines its visual brightness when viewed with a reflected light. Yes, absolutely correct. Now the albedo of Mercury is much greater than the albedo of the Earth. Okay. Now albedo मैंने क्या बताया आपको? It is the power of reflection. Now Mercury is the closest planet to the Sun and it has a very low albedo. Why it has a very low albedo? Because it is mainly composed of the dark rocks. So dark का मतलब क्या होता है? Anything that is related to black or brown के सेंस में उसका रिफ्लेक्शन होता है. सो ब्लैक वी नो इज नोन फॉर एब्जॉर्प्शन नॉट रिफ्लेक्शन. तो एल्बीडो जो है दैट इज नॉट देयर ऑफ मरकरी का एल्बीडो नहीं होता है. ठीक है. नाउ अर्थ, द एल्बीडो ऑफ द अर्थ is much higher than Mercury. Because why? Because the earth has clouds, the earth has oceans, the earth has ice. Ice का क्या कलर होता है? Ice का कलर white होता है and white is known for reflection. Then the earth has vegetation. Earth is not a merely planet that is made up of rock. The earth constitute life. That is why various colors are found here. So obviously the albedo of the earth is higher than that of the albedo of Mercury. That is why the second statement here is incorrect. Only the first statement, that is the first statement that is given here, is correct. Now albedo का concept is very important. एंड हाईएस्ट एल्बीडो ऑफ द अर्थ की अगर मैं बात करूं तो वो आइस कैप्स जो होते हैं अर्थ पे, उनका हाईएस्ट एल्बीडो होता है वाइट, बिकॉज दे आर वाइट इन कलर, सो दे रिफ्लेक्ट मोर. ठीक है. ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक लेस टाइम देन द टाइम दैट इज टेकन बाय द अर्थ. ठीक है. Next is the diameter of planet Mars is less than that of the Earth. Now we know that the planets move around the Earth in an elliptical orbit. ठीक है. अभी यहाँ पे मरकरी है, ये सन है मान लो, तो इधर मरकरी है, इधर वीनस है, इधर अर्थ है और ये मार्स है. तो आप मुझे बताओ अर्थ को तो इतना टाइम लग रहा है मूव करने में, एंड मार्स को कितना इलेप्टिकल ऑर्बिट में कितना ज़्यादा इसको मूव करना पड़ रहा है. तो क्या दिस इज़ लॉजिकल दैट मार्स विल टेक लेस टाइम देन व्हाट इज़ टेकन बाय अर्थ? नो ना, मार्स विल टेक मोर टाइम क्योंकि इट इज़ मोर फार्दर फ्रॉम द सन. ये भी एक लॉजिक है. मार्स इज़ मोर फॉरवर्ड, मोर फार्दर दैन द सन. सबसे कम टाइम किसको लगेगा? फिर मरकरी को लगेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. तो आंसर तो हमारा यहीं से आ गया कि असर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न इज ट्रू. अब रीज़न देख लेते हैं क्या है. रीज़न यहाँ पे दिया है द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. एब्सोल्युटली करेक्ट है. नाउ द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट का क्या रोल होता है? सो द डायमीटर अफेक्ट्स द सरफेस, इट इफेक्ट्स द ग्रेविटी. जितना ज़्यादा डायमीटर होगा ग्रेविटी उस हिसाब से इफेक्ट होगी. देन व्हाट हैपेंस इज रोटेशन स्पीड. more the gravity is there, more the diameter of the planet is there, higher the lower the rotation power will be. ठीक है. नाउ थिनर एटमोसफेयर होता है. सो ए हमारे यहाँ पे फॉल्स है, आर इज ट्रू है कि डायमीटर ऑफ प्लैनेट मास इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Let's now move to the next question. ये again question assertion reason का है and it has been asked in the UPSC CRSC prelims examination. Now the existence of human life on Venus is highly improbable. बिल्कुल करेक्ट है. Why it is improbable? Because at Venus there are extreme conditions. Because there are high level of carbon dioxide in the atmosphere. Now carbon dioxide is a greenhouse gas. What does a greenhouse gas means? The greenhouse gas traps the heat. It traps the heat and अगर heat ज़्यादा होगी तो temperature rise करेगा. Why it is known as greenhouse effect and why it is known as the global warming? अब greenhouse gas और global warming में क्या difference है? Now greenhouse gas is not any greenhouse gas is not a negative thing because it helps to maintain the temperature of the earth. So an ideal amount of greenhouse effect is necessary
it is necessary for maintaining the temperature, it is necessary for the plants to grow. But अगर ये CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट विल बी मोर. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा है तो हीट विल बी ट्रैप्ड मोर, एंड व्हेन हीट विल बी ट्रैप्ड मोर it will lead to the rise in temperature, and when the temperature, the general temperature will rise, it is known as global warming. So that is why this greenhouse gases, it is not at all a negative phenomenon, it is a positive phenomenon, but excess of anything is bad. Excess of greenhouse gas, it means that excess of CO2 is there. Excess of CO2 मतलब ज़्यादा गैस ट्रैप होगी, हीट ट्रैप होगी, ज़्यादा हीट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. एंड ग्लोबल वार्मिंग से देयर इज Kyoto Protocol is related. ठीक है. So Kyoto Protocol is related with the global warming, that you also need to know. ठीक है. So Venus में तो life improbable है. Now Venus has extremely high temperature of carbon dioxide in its atmosphere. Yes, the carbon dioxide in Earth is comparatively less to that of the Venus, and the assertion that is given here is directly corresponding to the reason here. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Okay, A is going to be the correct answer to this question. Let's now move to the next question. Now consider the axis of the Earth's magnetic field is inclined at a 23.5 degree to the geographical axis of the world. Now the Earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada, and the Earth's magnetic equator passes through Thumba in South India. Now चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं. अब if you have seen and I have told you the earth में, अब इसमें से हमें क्या बताना है, we have to mention the correct statement. Now the earth magnetic field is not inclined at 23.5 degree. This is the axial tilt of the earth, but around 11 degree inclination होता है. ठीक है. So यहाँ से we have come to this point that this is absolutely incorrect. तो 1 यहाँ पे incorrect हो गया. Now the second statement is absolutely true, that the Earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada near the Ellesmere Island. Now Ellesmere Island, you have to remember that it is in Canada, and it is where the Earth magnetic pole is believed to be there. ठीक है. Now Earth magnetic equator passes through the Thumba in south. Thumba is in Thiruvananthapuram, and there is a rocket launching station in Thiruvananthapuram as well. This is the reason, because ऑर्बिट में जाने में ईजी होता है. ठीक है. 2 and 3 here is absolutely correct. Let's now move to the next question. These are just factual question. आपको ये ध्यान में रखना है कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, इट इज लोकेटेड इन कनाडा, एंड मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ. यस, लॉजिकल बात है कि सेम फेस जो होगा मून का वो ऑलवेज फेस दी अर्थ, क्योंकि मून भी तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना. मून भी उसी एक्सिस में ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है जिसमें अर्थ रोटेट कर रहा है. तो जब भी मून राइट शिफ्ट होगा अर्थ भी राइट होगा, जब मून लेफ्ट शिफ्ट होगा तो अर्थ भी लेफ्ट शिफ्ट होगा. तो सेम फेस ऑफ द मून विल ऑलवेज फेस दी अर्थ. नाउ सेकेंड देखते हैं. द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन in its own axis in 23.5 days, which is about the same time that the earth take to orbit. ठीक है. नाउ सबसे पहला तो मून को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 23.5 डे नहीं लगते हैं, बट इट टेक्स 27.3 डेज. ठीक है. सो दिस इज नॉट what that is related to earth, because earth in general takes around 29 to 30 days. ठीक है. तो रीज़न हमारा इनकरेक्ट है यहाँ पे. assertion is absolutely correct. ठीक है. C is going to be the correct answer to this question. Let's now move to question number 11. Consider the following statement. Moving from one place on the earth to another place of the high latitude, the weight of an object decreases. Next है हमारा the earth is not a perfect sphere. Yes, the earth is not a perfect sphere. Now this reason is absolutely correct. Why? क्योंकि earth को sphere नहीं बोला गया है. The shape of earth is described as geoid shaped, and this is given in the NCERT. Spherical नहीं बोला जाता है. Geoid का मतलब ही होता है earth like shaped.
ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, तो रीज़न तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर place of high latitude, the weight of an object decreases. Now the weight of an object, it depends upon the gravitational force of the earth. Okay, and this gravity varies with the distance from the center of the earth. Now moving from a one place, कोई person A place से B place तक गया, ठीक है, it means that this person is closer and it is nearer to poles, पोल के नियर है, therefore the weight of an object increases when a person goes from equator to pole. जैसे इक्वेटर है एंड डिस्टेंस पे हमारा पोल है, when a person moves from one place to another with on a high latitude, latitude change हो रहा है, the weight of a person on a equator is less, and whenever the person moves from equator to pole his weight increases. ठीक है, सो assertion यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि weight of an object डिक्रीज नहीं करेगा, it would tend to increase. ठीक है, and reason is absolutely correct, so D is going to be the correct answer to this question. Let's now move to the next question. Now among the following, which planet take maximum time for one revolution to complete one revolution around the sun? अभी डिस्टेंस के हिसाब से देख लो, मैंने बताया था मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो कौन सा यहाँ पे वीनस के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर है, तो ऑब्वियसली जुपिटर विल टेक मोर टाइम, मैक्सिमम टाइम फॉर रिवॉल्यूशन. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है जुपिटर की, सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct with reference to our solar system. Which of the following statement is correct with regard to our solar system? The earth is the densest of all the planets in our solar system. Next is the predominant element in the composition of earth is silicon. No, it is not silicon, but earth की अगर composition की मैं बात करूँ तो iron makes up of 35% of the earth, which is followed by oxygen that is constituted about 30%, and then comes the silicon which is around 15%. so ये statement तुम्हारा गलत है. now the sun contains 75% of the mass of the solar system. no, not 75%, but around 99% of the mass of the solar system is contained by the sun. ठीक है, so this one is also incorrect. the diameter of the sun is 190 times that of the sun. it is not 190 but 109 times of the sun of the earth. ठीक है, जो डायमीटर है सन का दैट इज 109 टाइम्स ऑफ द सन, जिसका मतलब ये है कि द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अराउंड 12,742 किलोमीटर एंड 109 टाइम्स वुड लाई, मतलब 1.3 मिलियन किलोमीटर के अराउंड होगा इसका. ठीक है, तो इट इज़ 109 टाइम्स नॉट 190 टाइम्स. देन द अर्थ इज डेंसेस्ट, इसका मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, विच टाइप ऑफ क्लाउड्स आर देयर? तो वहाँ पे आइस क्रिस्टल इन सिरस क्लाउड्स होते हैं. नाउ लेट मी गिव यू सम ऑफ द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. नाउ सन की जो हेलो होती है ना, हेलो मतलब द लाइट दैट इट एमिट्स इट इज इन सर्कुलर रेनबो रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ दिस रेनबो लाइक स्ट्रक्चर हैज़ हाई क्लाउड्स. नाउ अगर मैं ये हम क्लाउड्स के चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लाउड्स, सो सबसे नीचे के जो क्लाउड्स होते हैं ना दैट इज स्ट्रेटस, उसके ऊपर होते हैं निम्बस, देन कम्स द क्यूमुलस, एंड देन आर द सिरस. सिरस आर द मोस्ट हाईएस्ट क्लाउड. तो सन के हेलो में हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं, तो स्ट्रेटस तो यहाँ पे हम स्ट्रेट एलिमिनेट कर सकते हैं. क्यूमुलस इज ऑल्सो एट द सेकेंड लेवल. सिरस हैज़ द हाईएस्ट क्लाउड्स, एंड यही क्लाउड्स जो होते हैं वो अर्थ के हेलो में होते हैं. ठीक है, सो ये एक लॉजिक है जहाँ से आप कर सकते हो. आपको बस ये ध्यान रखना है कि सन के हेलो में देयर आर हाई क्लाउड्स, एंड वी शुड नो दैट सिरस आर द हाईएस्ट क्लाउड दैट आर फॉर्म्ड इन द अर्थ. ठीक है,
That is why C is going to be the correct answer to this question. Let's now move to the next question, that is question number 15. Assertion and reason का question है. Now this question is, artificial satellite are always launched from the earth in the eastward direction. अब यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है एक्सट्रीम वर्ड्स के लिए. ऑलवेज है यहाँ पे. ऑलवेज मतलब जब भी वो लॉन्च किए जाएंगे वो ईस्टवर्ड में किए जाएंगे. ठीक है, तो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं ना एग्जाम्स में वो मोस्टली गलत होते हैं. दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड. द रीज़न इज़ अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट अटेन्स दिस एस्केप वेलोसिटी. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है हमारा, दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नाउ जनरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट ईस्ट डायरेक्शन में लॉन्च किए जाते हैं. वाई? बिकॉज अर्थ उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर हम सैटेलाइट को भी ईस्टवर्ड लॉन्च करेंगे तो इट वुड हेल्प द सैटेलाइट अटेन मोर स्पीड. ओके, नाउ इससे क्या होता है? सेव फ्यूल. फ्यूल भी सेव होता है, बट दीज आर नॉट डन ऑलवेज. वाई? Because in the case of observational satellites, that the satellite that determine that helps to image the earth, temperature check करना meteorological purposes से, या polar observation के लिए जो satellites होती है ना, that are mostly launched in the northward और साउथवर्ड डायरेक्शन. अब इसका क्या कंसेप्ट है? जैसे ये मान लो अर्थ है, ठीक है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अगर पोलर सैटेलाइट्स को या इमेजिंग सैटेलाइट्स को आप ईस्ट डायरेक्शन में करोगे तो वो तो ऐसे ही ऐसे घूमते रहेगी. बट इन द केस ऑफ पोलर सैटेलाइट्स, डिस्पाइट ऑफ अर्थ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दीज आर लॉन्च इन नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड डायरेक्शन. अभी नॉर्थ में लॉन्च होगी तो ये ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, तो होल ऑफ द अर्थ विल बी अप्रोप्रिएटली इमेज्ड. ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल ऑफ द सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है. सो आज के क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं. आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक. कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको और वीडियोस चाहिए इस पर. I'll continuously upload the video on this playlist अलग अलग subjects के. So thank you for watching.